So today we are going to Pelabuhan Ratu, which is just ahead of Sukabumi. Okay, so I'll just withdraw some money and I'm going to show you how is the journey. And again we are going in car, so this is the car which I'm going in. So just stopping by here at the gas station to fill up some petrol. So by now we have covered almost around 40 kilometers. Okay, so since it is just highway, we're just coming out of Jakarta and moving towards Bogor, so it's going to be faster here. But as we start our journey from Bogor towards Sukabumi and then towards Pelabuhan Ratu, that journey is going to be time taking, and hopefully we don't hit any traffic. Hello. 100 per light. Yeah. Yes. 1 second. Thank you. Okay, so she has said thank you. Now we are going to move ahead. By the way, petrol prices are quite cheaper here when you compare it with the prices back in India. Here it is just costing around 30 rupees, 30 INR per liter, whereas in India it used to cost around 100 INR per liter. तो फिर से आगे हम लोग हाईवे पे। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन होती है, तो अगर आप जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पे तो भी आपको टायरिंग उतना ज़्यादा नहीं लगता है जितना कि यूजुअली अगर आप नॉन ग्रीनरी प्लेसेस वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हो। और लेकिन हाँ, अगर जब भी कभी आप ट्रैफिक हिट करते हो तो ट्रैफिक यहाँ का बहुत वर्स है। आई मीन आई थिंक वन ऑफ द टॉप, अगर टॉप 3 वर्स्ट ट्रैफिक्स में होगा तो आई थिंक इंडोनेशिया का नाम 100% होगा। अभी हम सुकाबुमी एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिटी तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन जो विलेज लाइफ है काफ़ी बिजी है। और लेफ़्ट साइड पे जो हॉकर्स हैं वो सामान वगैरह बेच रहे हैं। काफ़ी टिपिकल जो इंडिया वाला सिनेरियो है, बिल्कुल वैसा है। एक तो यहाँ ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर जगह पे। कहीं भी चले जाओ इसकी समस्या है ही है, चाहे आप सिटी में जाओ, विलेज में जाओ, कहीं भी जाओ। Ambulance is passing by. It's good that people have given way to ambulance, so that's really nice to see. So we have reached finally here at Ocean Queen Resort, and place is as usual is very nice. Especially you get beautiful pantai. Okay, so pantai is beach here in Indonesia.
It's quite nice. Looks in fact better during morning or in the evening, but yeah, still beautiful in the afternoon as well. It's hot though. And we do have Indonesian kids here. Let's swim. तो अभी बाहर में एक शॉप थी फिशेस एंड चिकन वगैरह की, तो हम लोग वहाँ आ गए हैं और यहाँ पे फ़िश बहुत जो है रीज़नेबल प्राइस पे है। जो सैल्मन फ़िश है वो अराउंड 150 रुपीज़ kg पे अवेलेबल है। तो ये फ़िश यहाँ पे कुछ फ़िश और चिकन वगैरह लेंगे जो कि हम लोग नाइट पे बारबेक्यू करने वाले हैं और डिनर में वही होगा। This is 1 kilo, 2 fishes, 1.5. We got caught in a big rain. It's still buying fish. Salmon is around 200 rupees 1 kg. Wow, what a beautiful sight to see. Since it's raining here, so dogs have taken shelter in our villa and I think they are feeling cold. It's raining really heavily outside. In fact, we had plans to shop around nearby areas, but since it's raining a lot, we just came back to our villa after buying a couple of kilograms of fishes and some ayam. Okay, so ayam is chicken here in Indonesia. तो बज रहे हैं शाम के कुछ 7 साढ़े 7 और यहाँ से जो हमारी मशक्क़त है कोयला जलाने की वो शुरू होती है। तो कोयला जलाते जलाते हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग गया। हमने सोचा था कि ये काम जो है बड़ा आसान होगा, लेकिन ये उतना भी आसान काम नहीं था। और क्योंकि आई थिंक मैंने पहले 1-2 बार कोयला जलाया हुआ था घर पे विंटर्स टाइम पे, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास जो गैसोलीन वगैरह या जो मिट्टी का तेल या पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए जो इसको जलाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग गया। Okay, so we are ready for barbecue. Okay. Oh, the smoke. Fish, squid, this masala, right? Ketchup mayonnaise. Ketchup nice. What's his name? Cumi. Cumi. Nama Cumi in bahasa Indonesia. Only we are working, hard-working people. All the ladies are enjoying their hard-working men. Yeah. So squid is ready. Nice. What's the name of this in Apa Indonesia? Kunyit. Kunyit. Kunit. Apa sih serem banget sih, Hat? Namanya juga bakaran.
Udah matang kali Han itu Han. Hard work by Pa Hasim. Hasim. Hasmi. Everyone always call me Hasim. Hasim. Because is that's like a very flu, common name. There is a famous cricketer in South Africa. Really? Yeah. Oh. Udah sayang, udah tak gosong. Tuh udah matang udah. Tuh mantap tuh. Belum. Well done, well done. Well done. Well done. Keep it up. Dia cobain deh cuminya rasa apa. Oh, aku buat salah-salah. Nggak suka cumi. I'll do. I can help you. Yeah. Orang tadi mau bikin video pas foto-foto ya. Iya. Besok pas bridal. Hardworking Indian guy. See you next. Udah matang. Han, piring Han. Nampan aja nampan. Sayang, nampan. Sate Pakai nampan udah matang. 10.000 sate. Sate dong katanya. Enak banget. Enak. How's it? Enak. Is it? Oh, still. Belum ya? Done or not? No. No. Ikan. Okay, just press the red. Ih, nanti jatuh ke api deh. Nggak apa-apa punyanya. Really. Fish barbecue is ready as well. Oke. Green chili and red chili sambal. Nice. Very spicy. Very spicy. Ini doang. Dah, stop. Apaan tuh? Batu kan? Kamu kayak ham. So everyone is now having food, and food was so delicious. I mean, especially putting a lot of hard work in barbecue. Thank God the food has turned out to be so delicious. So see you guys. I think that's it for now. See you in the next video. Do subscribe if you haven't subscribed until now, and if you are new to the channel, please also give your suggestion. What would you like to see in the next videos? Thank you so much for watching.